अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने सबसे पहले रूट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। रूट्स में सिंपली आपको बस तीन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। नंबर वन, आपको रूट्स के नेम आने चाहिए, उनकी एक एक दो दो एग्जांपल्स आनी चाहिए। एंड लास्ट नंबर पे आपको उनका थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया होना चाहिए कि उनमें पैटर्न कौन सा है एब्जॉर्प्शन का, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, सबसे पहले हम ओरल रूट की बात करें। ओरल रूट में जो है हम डिफरेंट जो है वो ड्रग्स यूज करते हैं। खास तौर पे जो ओरल रूट में ड्रग्स यूज होती हैं हमारे पास, ऐसी तमाम ड्रग्स जो हम टेबलेट के फॉर्म में जो है वो लेते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में लेते हैं, या फिर ऐसी तमाम ड्रग्स जो कि हम ओरल रूट से यूज करते हैं। ठीक है, अब इनमें स्पेसिफिकली क्योंकि ओरल रूट में बहुत सारी मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम रिलीज हो रहे होते हैं, सलाइवा रिलीज हो रहा होता है, स्टमक के अंदर हमारे पास जो है वो गैस्ट्रिक जो है वो एसिड और गैस्ट्रिक जो है वो जूस रिलीज हो रहा होता है। इसी तरह डिफरेंट एंजाइम्स, जूस, हार्मोन्स, डिफरेंट चीजें जो वो रिलीज हो रही थी ओरल रूट में। इसकी वजह से क्या है, जो भी ड्रग हमारी बॉडी में जाती है उस पर डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्ट करती है, उसको इनएक्टिवेट कर सकती हैं, उसको जो है वो मेटाबोलाइज कर सकती है। सो ड्रग पे काफी इफेक्ट आ सकते हैं। सो इस चीज को बचाने के लिए हम जितनी भी ड्रग्स यूज करते हैं उनको डिफरेंट जो है वो तरीकों में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सबसे पहले एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन करते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं उनके ऊपर एक ऐसी कोट की लेयर बना दी जाती है कि जो हमारे पास स्टमक में, जैसे कि ओमेप्राजोल है, ओमेप्राजोल के अंदर ऐसे होता है, खास तौर पे जो ओमेप्राजोल है कि वो एसिड अनस्टेबल होती है, यानी स्टमक में जाके वो अनस्टेबल हो सकती है। सो उसके ऊपर एक ऐसा कोट होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होती है, तो उसके एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है, तो वहां से वो अब्सॉर्ब हो जाती है। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, कैप्सूल की फॉर्म में हम पूरा का पूरा कोट ऊपर बना देते हैं, शेल बना देते हैं, जिससे हमें वो स्पेसिफिक कोटिंग होती है कि वहां पे जाके जिस जगह पे उसने रिलीज होना हो वहां पे वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, सो ये दो डिफरेंट ऑरल रूट से जो है हम प्रेपरेशन करते हैं कि जिस तरह जितनी वो अनस्टेबल होती किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से, कुछ अनस्टेबल नहीं भी होती, सारी की सारी अनस्टेबल ही नहीं है। सो कुछ जो है वो रेजिस्टेंट होती हैं इन सारे एसिड्स एंजाइम से, सो हम डायरेक्टली वैसे ही दे देते हैं। उसके बाद सबलिंगुअल रूट इसमें स्पेसिफिकली आता है ओरल रूट के बाद, कि जिसमें हम कोई भी ड्रग जो अपनी टांग के नीचे जो है वो खास तौर पे रख लेते हैं, तो उसकी रैपिड अब्जॉर्प्शन होती है, सो वो बाईपास करती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ये भी हम पढ़ते हैं कि जीआईटी का जो हार्श इन्वायरमेंट होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसको वो पास कर जाती है। फिर हमारे पास पार एंटर रूट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार एंटर रूट में हमारे पास डिफरेंट जो है वो रूट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस आईवी आ जाता है, आईएम आ जाते हैं, सबक्यूटेनियस आ जाता है, ट्रांसडर्मल, डिफरेंट इसके आ जाते हैं। सो इनमें पहली तो बात यह है कि इनका फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है आईएम आईवी रूट का कि डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में हमारे पास ड्रग यानी एब्जॉर्प्शन 100% हमें मिल जाती है, बायोअवेलेबिलिटी भी 100% होती है। वी विल डिस्कस दीज टू थिंग्स, बायोअवेलेबिलिटी एंड द एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होती है, बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, 100% होती है। सो इस तरह हमें उसका फायदा हो जाता है। दूसरा इसका फायदा क्या है, जो मेटाबॉलिज्म होना होता है, जो जीआईटी पे नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट, उससे बच जाते हैं। डिफरेंट एंजाइम का जो इफेक्ट होता है ड्रग पे, वो इफेक्ट बच जाता है। इनएक्टिवेशन हो सकती है, उससे अवॉइड हो जाता है। सो डिफरेंट इनके फायदे होते हैं। आईएम आईवी में हमारे पास डिफरेंट जो है वो होती है। फिर हमारे पास आईएम में जो है वो डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स है, जैसे हेलोपेरिडोल की उसने एग्जांपल दी हुई है। आईवी के अंदर भी जो है वो डिफरेंट ड्रग इन्फ्यूजन की फॉर्म में हमारे पास, जैसे कि सेफ्ट्राइएक्सोन के इंजेक्शन मोस्टली आईवी हम लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया सबक्यूटेनियस, जैसे इंसुलिन हम लगाते हैं खास तौर पे पेशेंट को। उसके बाद हमारे पास दूसरे रूट में ओरल इनहेलेशन आ गई, नेजल इनहेलेशन आ गई, इंट्राथीकर रूट आ गया, जिसमें हम डायरेक्टली जो है वो सीएनएस नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंचाने के लिए हम देते हैं, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी वगैरह हम यूज करते हैं। सो ये डिफरेंट रूट्स हैं। टॉपिकल जो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, रेक्टल वगैरह, ये सारे रूट्स हैं। सो आपको इनका आइडिया होना चाहिए, एग्जांपल्स याद होनी चाहिए, एंड उसके एडवांटेजेस याद होने चाहिए। सो ये इसकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस एंड ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आईएमआईवी रूट में जो मोस्ट जो डिसएडवांटेज है उसका वो ये है कि वहाँ पे आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, सिरिंज की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे मार्क पड़ जाता है। सो समटाइम जो है वो स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। सो ये डिफरेंट उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। But the main topic which we are going to discuss is absorption of the drug. What does absorption mean? Absorption means the transfer of the drug from the site of administration to the circulation. For example, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं। अगर ये हमने एक ड्रग ली है जी 500 mg की पेनाडोल।
ठीक है। 500 mg ये हमने ड्रग ली है जी, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से फिर हमारे पास जीआईटी में पहुंचना और जीआईटी से सर्कुलेशन में पहुंचना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। कि जीआईटी से जब वो सर्कुलेशन में जा रही, ब्लड में अब्जॉर्ब हो रही है, सो दिस इज बेसिकली वी कैन से दिस इज absorption of the drug. This is the transfer of the drug from the site of administration to the bloodstream or the circulation. This is called as absorption. So there are different mechanism of the absorption of drug. Passive diffusion है, कुछ ड्रग्स जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को यूज करते हुए, बहुत सारी ड्रग्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। कुछ जो है लाइक ग्लूकोज के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सारे सेल्फ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूज करते हैं, ग्लूट को यूज करते हैं। कुछ जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो हमारे पे एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस से वेसिकल बन के जो है वो ट्रांसफर होती है। सो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ड्रग। सो दीज आर डिफरेंट मीन्स कि कैसे हमारे पास ड्रग, ये हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन जो है जैसे आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से, यहाँ पे ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो वाटर सोलुबल ड्रग्स होती है डायरेक्टली यहाँ पे आते आते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी स्पेसिफिक कैरियर को यूज करते हैं, बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और कैरियर को यूज करके वो आती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास मेन चीज क्या है कि एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है बट उसने ऑपोजिट साइड पे जाना, वो भी किसी कैरियर को यूज करके प्लस एनर्जी को यूज करके यहाँ पे आती है। और कुछ जो लार्ज ड्रग्स हैं वो अपने वेसिकल बना के जो ऑपोजिट साइड पे जो है वो जाती है। सो दीज आर डिफरेंट वेज के कैसे हमारे पास ड्रग्स जो है वो एक्ट करती हैं और कैसे हमारे पास ये सारा मैकेनिज्म होता है। ठीक हो गया। Coming toward the factors that influence the absorption. So here we come, there are different factors and there are different things we have to discuss about the absorption. So it is the transfer of drug from the site of administration to the blood. How we can enumerate or how we can write or we can explain different factors that affect on the absorption. So we will discuss about different factors. First of all, we will discuss the environment. What is the environment of the GIT? Is the it is acidic or basic or harsh environment? So it is basic. And at this is chemical compounding. What kind of ingredient it is? It is water soluble or the lipid soluble. Number third is route. Either it is in the oral route or administration in IV, IM, subcutaneous, sublingual. What is the route of administration? Next one is effect of pH. So there is a big or vast effect of pH on the drug absorption because जो ड्रग्स कुछ होती है हमारे पास, अगर वो एसिडिक इन नेचर है तो वो किस इन्वायरमेंट में ज्यादा होंगी, जो बेसिक इन नेचर है वो किस इन्वायरमेंट, सो इट इज इफेक्ट अ लॉट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट इज ड्रग रिलेटेड। ड्रग रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, these are molecular weight, size, solubility, polarity and ionization. So whenever we will discuss the factor of anything, it is absorption, bioavailability, volume of distribution, we will discuss two kind of factors. One is drug related, which is always molecular weight or size, solubility, polarity, ionization and quaternary amine, surface area. This is all about, these are basically drug related factor कि ड्रग जो है वो कितना उसका साइज है, क्या उसकी नेचर है, क्वार्टरनरी है, टर्शरी है, पोलैरिटी क्या है, सोलुबिलिटी कितनी है. So we will always discuss about these factors whenever we will discuss any topic of the general pharmacology. So these are basic factors. So obviously drug का factor ये होंगे. And other factors are basically patient related factors, which is environment of the GIT or the route of administration. Other is the health of the patient and age of the patient and the pathology that is related to the patient. So these are basically patient related factors, and some are important factors that are other than the drug related and patient related factor. These are basically chemical, compound, route and effect of pH. So whenever we will discuss about the factors, we have to enumerate, we have to discuss in three ways. One are drug related, other are patient related, and other are specific factor of that process. So this is all about the factors that influence the absorption. One is the effect on the pH on the drug absorption. So most of the drugs are either weak acids or weak bases. Acidic drugs release a proton causing a charge anion. Whenever we will get acidic drug, it releases the proton and anion. Whenever we will take a basic drug, it will basically again loss of a proton and produce an uncharged base. So this will form a charged base, this will form an uncharged base. So depending upon this,
This is basically the factor of absorption, okay, how the body will or the body will respond to the acidic or the basic drug. So this is the basic concept of the acidic and basic drug, and the response of the body to the acidic and basic drug. So coming toward this point, so here is the weak acid. Whenever we take a weak acid, the it will simply cross the lipid membrane. So what will it do? It will come into the opposite side and releases the proton and the anion. On the other hand, if it is in ionized form, so it releases the hydrogen, and anion cannot be crossed through the lipid membrane. On the opposite side, when we take a base, the base cannot go or cross the lipid membrane, so it will convert into a proton, and it will convert it into an uncharged form. So uncharged form can cross the membrane. So simply, an uncharged form can easily cross the lipid bilayer, while the charged form cannot cross or easily cross the lipid bilayer. So this is the basic factor. So whenever we take an acidic drug, it will first convert it into its active metabolites, so it cannot cross. But normally acidic drugs can cross the lipid membrane. But whenever I take a weak base as a drug, so it will first ionized into a proton and an uncharged form ion, or sorry, uncharged form a molecule or a product which can cross the lipid membrane. So this is all about the factor of pH. We will again discuss about the pH and the Hazel-Henderson equation. So next factor is basically blood flow, or simply we call it is the basically patient related factor. So this is the patient related factor, which is the basically health of the patient. So how the heart of the patient is uh, going to work, and what is the flow of the patient, blood flow of the patient. So again, more the blood flow, more the rate of absorption. So more the passive diffusion or the active transport or the facilitated diffusion will occur. Surface area of again drug, which is drug related factor, contact time and surface area and other. There are different factors we already discussed. So whenever we will discuss about the factors that that are influencing the absorption, we will discuss in three ways again: drug related, patient related, and specific factor. So this is all about simply absorption. So one factor which is missing is the route of administration. Again, I have already discussed about it. When we take a drug in oral route, the absorption is less, the absorption is minimized because of the first pass metabolism, because of the harsh environment of the GIT. But when we take the drug into the IV or IM route, this is very easy path to get a drug, and it will absorb quickly and rapidly. So this is the factors which influence the drug absorption. Coming toward the next topic, which is bioavailability. This is very important topic. What does bioavailability means? Bioavailability means the fraction of administered drug that reaches the circulation in unchanged form. I am again saying the fraction of the drug, administered drug that reaches the circulation in unchanged form. Unchanged form is very important. So for example, I already discussed about it. If we take 500 mg of Panadol, 500 mg of paracetamol, so if we get the 400 mg of Panadol or a paracetamol in blood, so this 400 should be in unchanged form. 100 is maybe excreted, is maybe inactivated, or maybe converted into some other metabolites. So this is basically, whenever we will discuss about the bioavailability, we always say, okay, the amount of or the fraction of drug that reaches the circulation in unchanged form. So this is bioavailability. So it is basically the fraction of the administered drug that reaches the circulation in unchanged form. So this is bioavailability. What is method to calculate the bioavailability? So this is the method to calculate the bioavailability. It is basically area under the curve, oral over area under the curve, injected form multiplied by 100. Like when we take a drug in IV form, we know in IV form there is 100% bioavailability, because
we directly put the drug into the circulation. So this is 100% bioavailability. So it means we are already injecting or putting the drug into the circulation. So this means the bioavailability is 100%. But when we are taking a drug into the oral route or by oral route, so there is the bioavailability will be less than 100% because of harsh environment of GIT, because of converting of drug into some inactivated form or some metabolites. So there are many changes, many factors that affect on the drug. So simply when we take a drug in injected form, so bioavailability is 100%. But when we take the drug in oral form, so bioavailability is less than the 100%. So we take a ratio which is area under the curve oral over area under the curve injected or IV IM form. So the answer will multiply by 100. So it will give us the percentage or the fraction of bioavailability. And the bioavailability has no unit because it is a ratio or and it is a percentage of the administered drug. So simply we will compare the two bioavailabilities. So it will give us simply the total amount of the bioavailability. Okay. Next, coming toward the factors that influence the bioavailability. Again, these are drug related factors, which is the molecular size, which is the solubility, polarity, molecular weight, ionization, and etc. Another are patient related, which is the health of the patient, flow, and everything, which we already discussed. But what are the specific factors that affect the bioavailability? These are basically route. Number one, route. This is very important because when we put a drug into the circulation, it means we will get 100% bioavailability. But when we administer a drug into the oral route, we get the bioavailability which is less than the 100%. So it is very important factor. So we already discussed about it, the route of the administration. Other one is the first pass metabolism. What is first pass metabolism? First pass metabolism means when we take a drug in GIT or the oral route by the oral route and it will come into the GIT. There are several methods, several processes that occur in the GIT. So it will go into the portal circulation before entering into the systemic circulation. So what will body do or to the drug? The drug is converted into some metabolites and some inactivated forms. So this is the first pass metabolism. Like for example, more than 90% of nitroglycerin is cleared during a single passage through the liver. लाइक जब हम नाइट्रोग्लिसरीन की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम सब लिंगुअल या फिर हम आईवी में क्यों देते हैं, इसकी रीजन यही है कि जब हम नाइट्रोग्लिसरीन ओरल रूट से लेते हैं 90% तो जब वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाती तो वहां से क्लियर हो जाती, सिर्फ 10% बॉडी को मिलती, बायोअवेलेबिलिटी 10% रह जाती है. सो हम नाइट्रोग्लिसरीन नहीं दे सकते. सो बायोअवेलेबिलिटी हमें बताती है कि ड्रग को ओरल रूट में लेना है, ड्रग को आईवी रूट में लेना है, आईएम में लेना है, सब लिंगुअल में, सब क्यूटेनियस किस रूट में लेना है. सो इट विल गिव अस आइडिया कि रूट कौन सा चूज करना है बायो, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो है अगर जीआईटी में गई फौरी तौर पे इनएक्टिव होगी, अनस्टेबल होगी, मिली नहीं हमें, उनकी बायोअवेलेबिलिटी 0% रहेगी. सो ऐसी ड्रग्स को हम जो है वो देखते हैं इससे. सो इट विल गिव अस द आइडिया. सो फर्स्ट पास इज बेसिकली हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या फिर सम अदर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. Other factors are basically first pass and then drug related molecular weight, stability, again the polarity and the chemical nature, solubility, all are the factors. So this is all about the bioavailability. So simply whenever we will you will be asked about the bioavailability, you have to say it is the basically fraction of administered drug that reaches the circulation in unchanged form. And what is the formula to find out the bioavailability? It is area under the curve oral or over area under the curve IV, or simply the injected form multiplied by 100. So it will give us percentage of the bioavailability. So this is all about the bioavailability. Next, we have to discuss two terms. One is bioequivalence and other is therapeutic equivalence. When we say there is the comparison between the bioavailability of two drugs, like we have to say कि एक ड्रग जो है उसकी बायोअवेलेबिलिटी 90% है, दूसरी जो है उसकी भी 90% है, एक की 0.9 है, दूसरी की भी 0.9 है. इट मींस कि ये दो ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी बायोअवेलेबिलिटी कंपेरेबल है, कि इनकी जो पीक है अचीव होने की सर्कुलेशन में वो सेम टाइम पे पहुंचती है. सो दीज टू आर बेसिकली बायो इक्वलेंट. And other are therapeutic equivalents. There are
two different drugs from two different categories can be two from two different categories and have same effect on the body. So these are therapeutic equivalence. ठीक हो गया? So this is all about the routes of drug and the bioavailability, absorption, and everything we have discussed. So in next lecture we will discuss about the drug distribution and the volume of distribution. So thank you so much everyone, and Allah Hafiz.